Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you're enjoying the best of health. I welcome you in my class. That is English for Grade 1. We are going to start Unit 8. Its title is Importance of Plants and Trees. So first we'll discuss the SLO based lecture division, my dear fellow teachers and my dear students. This is the SLO based lecture division for this unit. First we'll discuss it, and after that we'll discuss what this unit is all about. So lecture 1A, under the title of grammar, we'll learn about particular naming words, and we'll cover the SLO to recognize that people and places have particular names. Lecture 1B, under the title of language focus, we'll learn how to read 1 and 2 syllable words, and we'll cover the SLO to spell 1 and 2 syllable words. Lecture 2A, under the title of grammar, we'll learn about describing words, and we'll cover the SLO to use some describing words showing quality, size and color. Lecture 2B, under the title of pronunciation skill, we'll learn about a beginning sound, and we'll cover the SLO to identify the words that begins with the same sound. Lecture 3, under the title of pronunciation skill, we'll learn about consonant cluster, and we'll cover the SLO to identify initial consonant clusters. Lecture 4, we'll start reading and understanding the text, and we'll cover the SLO to predict the story by looking at pictures in the text. Lecture 5 will continue and complete reading and understanding and comprehension of this unit, and we'll cover the SLO to interact with the text and use reading strategies to locate specific factual informations and fill in the missing information to complete simple sentences. Lecture 6, under the title of writing, we'll learn about ordinal numbers, and we'll cover the SLO to recognize the numbers as first, second and third, etc. Lecture 7, under the title of language focus, we'll cover the SLO to recognize and respond to command. And we'll cover the SLO to recognize physically, orally, respond to and use simple sentences showing a request and command in a school scenario. Lecture 8, under the title of oral communication skill, we'll learn how to express needs, and we'll cover the SLO to demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group to express needs. Lecture 9, under the title of reading and thinking skill, we'll learn how to read labels, and we'll cover the SLO to read familiar words appearing on a variety of reading materials such as food labels, toy boxes, etc. Lecture 10, under the title of writing, we'll learn how to use naming and action words to write few sentences. So my dear students and my dear fellow teachers, this is the SLO based lecture division for this unit. Now let's see what this unit is all about. The title of the unit is Importance of Plants and Trees. So बेटा क्या हमें इस टाइटल से पता चल रहा है? पौधों और दरख्तों की अहमियत, यानी पौधे और दरख्त हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं. So let's see इस यूनिट में क्या बताया गया है. We see plants growing around us. हम देखते हैं हमारे इर्द गिर्द पौधे उग रहे हैं. We grow them in our houses, schools and parks. हम उन्हें अपने घरों, स्कूलों और पार्क्स में उगाते हैं. Plants are useful for us. पौधे हमारे लिए मुफीद हैं. Plants give us, अब किस तरह से मुफीद है? पौधे हमें ताज़ा हवा देते हैं जिसमें हम सांस लेते हैं. We make furniture from the wood of the trees. हम दरख्तों की लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं. We sit under the cool shade of a tree on a hot day. गर्मी वाले दिन हम दरख्त की छांव में बैठते हैं, जो कि जिसमें ठंडक होती है.
प्लांट्स गिव अस, पौधे हमें देते हैं फ्रूट्स, फल, वेजिटेबल्स, सब्जियां एंड सीरियल्स और अनाज। अच्छा बेटा, सीरियल्स मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हर वो अनाज जैसे कि गंदम, चावल और फिर इससे जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो भी तो हमें पौधों से मिलती है ना। तो ये सारी चीज़ें यानी कि फल, सब्जियां और अनाज हम पौधों से हासिल करते हैं। मैनी बर्ड्स, बहुत से परिंदे, मेक देयर नेस्ट, अपने घोंसले बनाते हैं ऑन ट्रीज, दरख्तों पर। सो ये भी दरख्तों का एक फ़ायदा है। प्लांट्स मेक आवर होम्स, पौधे बनाते हैं हमारे घरों को, स्कूलों को, एंड पार्क्स, और पार्क्स को कूल, ठंडा एंड ब्यूटीफुल और खूबसूरत। ट्रीज एंड प्लांट्स आर द ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह सुब्हानहू ताला, दरख्त और पौधे अल्लाह ताला की नेमत हैं। वी शुड बी ग्रेटफुल फॉर दिस, और हमें इसके लिए अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। We should also take care of plants and trees, हमें पौधों और दरख्तों की हिफाजत भी करनी चाहिए, राइट। सो बेटा देखें दरख्तों के हमें कितने फ़ायदे हैं, अब इससे भी ज़्यादा है, जब आप बड़े होंगे तो आप और भी ज़्यादा देखेंगे। तो आज हमने जो बेसिक चीज़ें हैं दरख्तों और पौधों के फ़ायदों के बारे में पढ़ी हैं, और हमने क्या सीखा है कि हमें पौधों और दरख्तों की हिफाजत करनी चाहिए। और अल्लाह ताला ने भी हमें कुरान में सूरह लुक़मान में बताया है, जिसकी आयत नंबर 10 है, एंड वी सेंड डाउन वाटर फ्रॉम द स्काइज, और हम आसमानों से पानी बरसाते हैं, एंड दस वी कॉज एवरी नोबल काइंड ऑफ लाइफ टू ग्रो ऑन अर्थ, और हम ज़मीन पर हर तरह की जानदारों को बढ़ाते हैं। तो बेटा अल्लाह ताला ने आसमान से पानी बरसाने का सिस्टम हर जानदार के लिए रखा है, इसमें से पौधे एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारे माहौल के लिए, हमारे लिए हैं। और पौधों की हिफाजत और पौधे लगाना एक तरह से अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी मुफीद चीज़ें पैदा की हैं, राइट। तो ये अच्छी बातें जो आज हमने सीखी हैं, इनको जहन में रखना है, दूसरों को भी बताना है, और पौधों का ख्याल रखना है, राइट। पौधों से प्यार करना है, पत्ते नहीं तोड़ने, फूल नहीं तोड़ने, पौधों को ख़राब नहीं करना। सो कल ग्रामर के पोर्शन से हम अपने इस यूनिट का आगाज़ करेंगे। टिल दैट टाइम टेक केयर, थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।